स्वागत है आपका GTV हिंदी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की शुरुआत। वलसाड जिले के आदिवासी इलाकों में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का मुद्दा लंबे समय से बहस के केंद्र में है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रबंधन द्वारा उचित उपचार नहीं मिलने के कारण मरीजों को निजी डॉक्टरों से दवा लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लंबे समय से लोगों द्वारा लगाया जा रहा आरोप वास्तव में सच है, जब मरीज ये भी आरोप लगा रहे हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए आने वाले मरीजों की बीमारियों का इलाज सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। कपराड़ा तालुका के मांडवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ने दवा लेने आए मरीज को एक्सपायर्ड दवा दे दी और वलसाड जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। दर्दियों डॉक्टरों को भगवान मानकर भरोसा करते हैं, लेकिन डॉक्टर इलाज को लेकर लापरवाही रखकर मरीजों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। कपराड़ा तालुका के मांडवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बुखार की दवा लेने आए मांडवा गांव के एक मरीज को डॉक्टर ने एक्सपायरी डेट की दवा दे दी। मरीज एक्सपायर दवा लेकर घर चला गया, लेकिन जब गांव के एक जागरूक नागरिक ने मरीज को दी गई दवा पर तारीख देखी तो पता चला कि दवा के इस्तेमाल की समय सीमा पूरी हो चुकी है। जब इलाके के स्थानीय लोगों को पूरे मामले की जानकारी हुई, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर की लोगों की देखभाल करने की ड्यूटी पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। ये पता चलने के बाद कि डॉक्टर ने मरीज को जो दवा दी है वह एक्सपायरी डेट की है, इसके बाद अन्य मरीजों में भी डर पैदा हो गया है। मांडवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से कितने मरीजों ने एक्सपायरी डेट वाली दवा दी होगी, इस बात को लेकर हड़कंप मच गया है। मांग उठ रही है कि इसकी जांच प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से कराई जाए। स्टाफ नर्स ने गलती से दे दी दवा, डॉक्टर दर्शना। पूरे मामले में मांडवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की महिला चिकित्सक डॉक्टर दर्शना से एक जागरूक नागरिक ने एक्सपायरी डेट की दी गई दवा के बारे में सवाल किया तो उन्होंने गलती स्वीकार करते हुए कहा कि आज सुबह OPD का लोड ज्यादा था। सुबह एक 11 वर्षीय लड़का बुखार और खांसी की समस्या के साथ आया। उन्होंने लड़के की जांच की और दवा लिखी और उसे दवा के लिए फार्मासिस्ट के पास भेजा, लेकिन चूंकि स्वास्थ्य केंद्र का फार्मासिस्ट तालुका स्तर पर वैक्सीन वितरण के लिए गया हुआ होने को लेकर उसके स्थान पर स्टाफ नर्स ने दवा दे दी। एक्सपायरी डेट वाली दवा हमेशा निकाल कर अलग रख दी जाती है, लेकिन गलती से ये दवा छूट गई और स्टाफ नर्स ने गलती से एक्सपायरी डेट वाली दवा दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट GTV हिंदी न्यूज। આજે જે સવારમાં OPD સવાર વધારે હતી અને જે પેશન્ટ જે છોકરું છે ને 11 વર્ષનું હતું એ મારા પાસે બતાવવા આવ્યું હતું તાવ અને કફની હિસ્ટ્રી સાથે। તો એમને મેં ચેક કર્યું અને અમારા જે ફાર્માસિસ્ટ છે આજે તાલુકા કક્ષાએ વેક્સિન ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં ગયા હતા એટલે એ હાજર નહોતા, એટલે એમની જગ્યાએ સ્ટાફ નર્સ અમારા OPD અને કેસ પેપર બંને સાચવતા હતા। જે દવા આપવાનું છે અને કેસ પેપર નવા પેશન્ટ આવે છે એમના માટે કાઢવાનું એ બંને એકલા સ્ટાફ નર્સ સાચવતા હતા અને આજે OPDમાં લોડ વધારે હતો તો એ જે મેડિસિન અપાઈ છે એ અમારા ફાર્માસિસ્ટે એક્સપાયરી દવા તો કાઢી જ મૂકે છે, પણ કદાચ એકાદ સ્ટ્રીપ ડ્રોવરમાં એમનાથી ભૂલથી રહી ગઈ હશે તો એ સ્ટાફ નર્સના ધ્યાનમાં નહીં આવ્યું અને સ્ટાફ નર્સના મારફતે એ અપાઈ છે। જે અમે હું આગળ હવે ચેક કરાવીશ કે કયા કારણથી એ રહી ગયેલી છે, હું ફાર્માસિસ્ટ પરથી ચેક કરાવીને આગળ હવે એવું ના થાય અમે ધ્યાન આપીશું। અત્યારે પણ કંઈક સ્ટાફ દ્વારા બીજી દવા બહાર અંદર બાજુ કાઢવામાં એ તો અમારા પાસે દર જે સ્ટોક એક્સપાયરી થાય છે એની ડેટ વાઇઝ જ આવે છે, તો એ દર વખતે જે નીકળતો હોય છે સ્ટોક એ અમે બહાર કાઢી રાખીએ છીએ યલો બેગમાં, કે જેથી જે ગાડી આવે છે બાયોમેડિકલ વેસ્ટની એમાં અમે ડિસ્કાર્ડ કરીએ છીએ। પણ આજે જે તમારો જે સ્ટાફ ખરો એ આજે રજા પર છે, બરાબર? ના, હજુ મારો સ્ટાફ રજા પર નથી ભાઈ, એ તાલુકા કક્ષાએ વેક્સિન ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં ગયા હતા। ના ના, પણ એમણે પછી ધ્યાન નથી આપ્યું ને તો જ આ દવા આવી। એ સવારમાં આવ્યા હતા, કાં તો પછી તમને ટાઈમ છે એટલા માટે ત્યાં ગયા હતા। એ ટાઈમ દરમિયાન મારો OPDમાં લોડ વધારે હતો તો એ દરમિયાન સ્ટાફ નર્સે જવાબદારી સાચવી છે। ના ના, તો એમણે જણાવવું જોઈએ ને તમને સ્ટાફને કે આ દવા એક્સપાયરી વાળી થઈ ગઈ છે, તો એ બહાર કાઢી અલગથી સાઈડમાંથી કાઢી રાખી હતી, ડ્રોવરમાં અલગથી રહી ગયેલી હશે। સ્ટાફ નર્સ ઘણા દિવસે બેઠા ને તેમનાથી ભૂલમાં અપાઈ ગઈ હશે, એક જ છે, બીજી નથી દવા ભાઈ, ભૂલમાંથી અપાઈ ગઈ છે। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए GTV हिंदी न्यूज। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.